Assalamu alaikum, dear students of Class 12th Biology. Welcome to this detailed educational video on the important topic homeostasis. ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पंजाब बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। हम इस इमेज के हर लाइन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उर्दू में तर्जुमा और तफसील से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। Section 1 Introduction English All living organisms must maintain a stable internal environment despite changes in the external environment. This ability is called homeostasis. It is essential for survival, normal growth, and proper functioning of the body. उर्दू तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस के बावजूद स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है। इस एबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये सर्वाइवल, नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। बिना होम्योस्टेसिस के बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती। Section 2 Definition English Homeostasis is the ability of an organism to maintain a constant internal environment, physiological stability, despite changes in the external environment. Key points: maintains internal balance, dynamic process, involves control and regulation, essential for life. Urdu Homeostasis एक organism की ability है कि वो constant internal environment यानी physiological stability maintain करे, चाहे external environment में कितने भी changes हों। Key points: ये internal balance maintain करती है, ये dynamic process है, control और regulation involve होता है, और life के लिए essential है। ये definition exams में बिल्कुल याद रखना। Section 3 How homeostasis works. English. It is mainly controlled by a negative feedback mechanism. The sequence is stimulus, change in environment, leads to receptor, detects change, leads to control center, processes information, leads to effector, produces response, leads to response, restores balance. Example, general. High temperature, stimulus, to skin receptors, receptor, to brain, control center, to sweat glands, effector, to sweating, response. Then the negative feedback loop diagram. Change in condition, stimulus, to receptor, detects change, to control center, compares and decides, to effector, carries out response, to response, restores balance, which brings back to homeostasis. Urdu Homeostasis mainly negative feedback mechanism से control होती है। Sequence ये है: stimulus यानी environment में change, receptor उस change को detect करता है, control center information process करता है, effector response produce करता है, और response balance restore करता है। Example: high temperature stimulus, skin receptors detect करते हैं, brain control center है, sweat glands effector हैं, sweating response है। Negative feedback loop में change होता है, body detect करती है, decide करती है, response देती है, और balance वापस आ जाता है। ये mechanism समझना बहुत important है। Section 4 Examples of homeostasis. First example, body temperature regulation. English. When body temperature increases, we sweat. Sweating cools the body and temperature returns to normal, 37 degrees Celsius. Urdu. जब body temperature बढ़ता है तो हम पसीना छोड़ते हैं. Sweating body को ठंडा करती है और temperature normal 37 degrees Celsius पर वापस आ जाता है. Second example, blood sugar level regulation. English. When blood sugar rises,
Pancreas releases insulin. Insulin helps cells absorb glucose and sugar level returns to normal. Urdu. जब blood sugar बढ़ता है तो pancreas insulin release करता है. Insulin cells को glucose absorb करने में मदद करती है और sugar level normal हो जाता है. Third example. Water balance osmoregulation. English. Kidneys regulate water and salt levels in blood. Excess water is removed in urine and balance is maintained. Urdu. Kidneys blood में water और salt levels regulate करती हैं. Excess water urine के जरिए निकाल दिया जाता है और balance maintain होता है. Fourth example. Breathing rate regulation. English. When CO2 level in blood increases, we breathe faster. More CO2 is removed and balance is restored. Urdu. जब blood में CO2 level बढ़ता है तो हम तेजी से सांस लेते हैं. ज्यादा CO2 निकाल जाती है और balance restore हो जाता है. Bottom sections. In simple words, homeostasis means keeping things steady inside our body so that all our organs can work properly even when the outside environment changes. Urdu. Simple words में homeostasis मतलब body के अंदर चीजों को steady रखना ताकि सारे organs ठीक से काम कर सके, चाहे बाहर का environment बदले. Why is it important? Maintains stable conditions for cells, helps in survival, keeps enzymes and body functions working within normal limits. Urdu. ये important है क्योंकि cells के लिए stable conditions maintain करती है, survival में मदद करती है और enzymes और body functions को normal limits में काम करवाती है. Remember, change happens, body detects, body responds, balance is restored. This is homeostasis. Urdu. याद रखे, change होता है, body detect करती है, body respond करती है, balance restore हो जाता है. ये ही homeostasis है. Dear students, इस पूरे टॉपिक को बार बार रिवाइज करें. Definition, negative feedback mechanism और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें. पंजाब बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप इस टॉपिक में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं. Best of luck for your exams. Keep studying hard. Allah Hafiz and thank you for watching.